नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। तहावूर् राणाम् आनीतमस्ति अपराधिनः प्रश्नकरणम् अजित् डोवलस्य सान्निध्ये। मोदी सर्वकारस्य राजनैतिकजयमिति अमित शाह। डेविड हेड्ली इत्यस्य परिवर्तनाय अपि प्रधानमन्त्री साकम् अभ्यर्थनां कृत्वा आर्जेडी। केन्द्र शिक्षा पद्धति निराकरणे प्रतिषेधं शक्तं। पीएम श्री विद्यालयस्य शिक्षास्तरं वर्धापयति इति कुम्मनम् अवदत्। विद्यालयाय 13 लक्षाधिककोटिरूप्यकाणि अनुवदिता पद्धति आसीत् पीएम श्री। जलसंभरणी मध्ये बफर जोन परिधिवर्धापनाय स्वीकृत केएसईबी विभागनिर्देशे प्रतिषेधः शक्तः भवति। घटनासम्बन्धि मतभिन्नतां स्पष्टीकृत्वा भाजपा विभागः प्रतिषेधमुखमागतः। प्रशासनविभागः इडुक्की जनपदस्थानं समीपं पन्द्वाह्वानं कुर्वन्ति इति च आरोपः। वार्ताः विस्तरेण। तहावूर् राणां भारतमानिता घटना मोदी प्रशासनस्य राजनैतिकजयप्राप्तिः भवति इति केन्द्र गृहमन्त्री अमित शाह। नेटवर्क 18 द्वारा समायोजित राइसिंग भारत कॉन्क्लेव मध्ये आसीत् गृहमन्त्री अमित शाह वर्यस्य प्रतिवाणी। राष्ट्रान्तरशत्रुताविषये आतङ्कवादकार्ये च भारतस्य निदेशग्रहणं धर्मपरं भविष्यति इति मोदी निर्णयस्य स्पष्टवाचमेव एषा घटना व्यक्तीकरोति इति भाजपा नेता CR केशवन् अवोचत्। दक्षिणपक्षस्य प्रशासनकाले मुम्बै न्यायविचारणायां कार्यं किमपि न कृतमासीत्। अजमल कसबाय बिरियानी दानं केवलं दत्तमासीत् इति विषये अस्मिन् केन्द्रमन्त्री पीयूष गोयल अपि प्रत्युत्तरमदात्। सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। वഖഫ് ഭേദഗതിയും വിരുദ്ധ്യ ആചരിത പ്രതിഷേധ പ്രക്രമേ ആതങ്കവാദീനാം ചിത്രാണി പ്ലക്കാർഡ് च ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വിഭാഗस्य सोलिडारिटी दलजनानां प्रतिषेधे आसीत् आतङ्कचित्रदर्शनम्। हमास स्थापकस्य अहमद यासिसस्य आतङ्कवादी यहिया सिन्वारस्य प्लकार्ड दर्शनेन आसीत् प्रतिषेधाचरणं। रक्षपुरुषाणाम् अनुमति निषेधात् परमपि प्रतिषेधाचरणं प्रवृत्तमासीत्। समरोऽयं वഖഫ് भेदगति बीजकं विरुध्य भवति, किन्तु विज्ञापनपत्रेषु उग्रवादीनां चित्राणि प्रदर्शितानि सन्ति। गतदिने जमाअते इस्लामिनः युवजनसङ्घटनायाः सोलिडारिटिनः नेतृत्वे प्रवृत्ते प्रतिषेधसमागमे आसीत् उद्घूर्णतावादीनां चित्राणि प्रदर्शितानि। गतदिने मलप्पुरं കരിപ്പൂർ विमानपत्तनपरिसरे मार्गम् उपरोधं कृत्वा आतङ्कतासङ्घटनायाः हमासस्य स्थापकस्य अहम्मद यासिनः तथा हमास् उग्रवादिनः यहिया सिन्वरस्य च विज्ञापनपत्राणि प्रदर्शितानि। ഈജിപ്ത് രാഷ്ട്രസ്ഥ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് സ്ഥാപകस्य ഇമാം ഹസനുൽ ബന്നനः ചിത്രം च प्रदर्शितम् आसीत्। आतङ्कताविरुद्ध संघर्षेषु निहताः सन्ति एते। सोलिडारिटी ISO संघटने संयुक्त प्रतिषेधम् आचरताम्। अतीव सुरक्षा मेखलायां विमानपत्तन परिसरे मार्ग उपरोधं कृत्वा आसीत् प्रतिषेध प्रकटनम्। रक्षकानुमति च नोपलब्धा। प्रतिषेधे संघर्षं प्रवृत्तम्। वഖഫ് ഭേദഗതി बीजकं विरुध्य आयोजिते प्रतिषेधे आतङ्कता नेतॄणां विज्ञापनपत्राणां प्रदर्शनं बोधपूर्वम् आसीत् इत्यस्ति सूचनाः। आतङ्कता शक्तीनां प्रोत्साहनं कुर्वन् केरळराज्यसर्वकाराणाम् अवष्टम्भः राज्ये आतङ्कता प्रचाराय शक्तिं प्रदाति। वार्तादलं जनम्। പാലക്കാടസ്ഥ ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭാ സ്വാമിത്വേ വർത്തമാന പനമണ്ണ ട്രെഞ്ചിംഗ് പ്രാങ്കणे खरमलिनवस्तूनां संस्करणविषये कोटिरूप्यकाणां क्रमराहित्यं प्रवृत्तमस्ति इति आरोपः प्रचलति। प्लास्टिकमलिनवस्तूनि मृत्तिकां स्थाप्य पद्धतिकार्यकरणे क्रमराहित्यम् आचरितमिति भाजपा पक्षात् आरोपितमस्ति। प्लान् कार्यकरणं भाजपा पक्षात् प्रतिरोधितमस्ति।
चीनाराष्ट्रस्य अधितारिफ् मध्ये पुनः अपि वर्धापनं कृत्वा अमेरिकीयराष्ट्रं 25% अधितारिफ् एव एतदनु वर्धापितमस्ति। चीनाराष्ट्रस्य वस्तूनां कृते एव एषः अधितारिफ् निर्णयः। ह्यः चीनाराष्ट्रात् अमेरिकीयवस्तूनां कृते 84% अधितारिफ् धनं निश्चितमासीत्। अस्मात् पश्चात् भवति ट्रम्प् प्रशासनस्य अयं निर्णयः। दोषपरिहाराय शबरीशाय समर्पित प्रचारयुक्त आचरणं भवति परगोट्टिपाट् इति कार्यक्रमः। भक्तजनपक्षात् समर्पित विशेषकार्यक्रमः भवति एषः। सन्निधानस्य उद्घाटनात् पश्चात् प्रतिदिने अपि माळिकपुरं मन्दिरस्य पार्श्वे एषः विशेषकार्यक्रमः प्रचलति। शबरीशस्य उत्सवकाले मुख्यध्वजस्तम्भस्य अधोभागे एव आचरणं प्रचलितम्। माळिकपुरं मंदिर परिसरे संगीतार्पणं कुर्वन् छर्छरवाद्यकाराः उत्सवकाले अय्यप्पस्वामी सविधे गानार्चनम् अकुर्वन्। सन्निधाने ध्वजस्तंभ परिसरे 7 जनाः मिलित्वा गीतार्पणम् अकुर्वन्। त्रिकालदोष निवारणाय भक्ताः छर्छरवाद्यार्पणं कुर्वन्ति। अय्यप्पस्वामिनः अवतारकाले दोषपरिहाराय साक्षात् श्रीपरमेश्वरः गिरिजनवेषं धृत्वा वाद्यार्पणम् अकरोत् इत्यस्ति भक्तानां विश्वासः। विश्वासस्य अस्य आधारे भवति माळिकपुरं मन्दिरे छर्छरवाद्यसहितम् उत्सवकाले गीतार्पणं प्रचलति। पूर्विकानाम् अनुष्ठानं संरक्ष्य अय्यप्पस्वामिने गायन्ति इति स्थानीयाः अकथयन्। त्रिकालदोषपरिहाराय अय्यप्पदर्शनात् परं माळिकपुरं समागत्य अनेकाः छर्छरवाद्यार्पणं कुर्वन्ति। वार्तादलं जनम्। हैन्दवसमाजस्य महत्त्वं स्पष्टं कृत्वा महामण्डलेश्वर स्वामी आनन्दवनं भारती महाराज हैन्दवसंस्कृतिं ये अनुकूलयन्ति ये तदनु अग्रे गच्छन्ति ते कदापि हैन्दविकतायाः वा सामाजिककार्यस्य वा व्याजमुखं न प्रतिगमिष्यन्ति। नामजपस्य शक्तिप्रसारणम् एतदेव इति स्वामीजी अवोचत्। मद्रसा मध्ये गत्वा ये धर्मं वास्तविकतायां पठितवन्तः ते एव उन्मादकवस्तुप्रयोगे अग्रगण्याः इति KT जलीलस्य परामर्शकाले एव स्वामिनः प्रस्तावस्य विशेषता। PM श्री पद्धति कार्यकरणे राज्यप्रशासक समिति निर्णयं विरुध्य विमर्शवाचम् उक्त्वा भाजपा राजनैतिक निर्वाहक समित्यङ्गः कुम्मनं राजशेखरः 13 लक्षाधिककोटि रूप्यकाणि एव पद्धति कार्यकरणाय केन्द्रपक्षात् अनुवदितमस्ति। विद्यालये शिक्षा सम्प्रदायस्य कार्यकरणवर्धापनाय भवति एषा पद्धतिः। अधुनातनकाले अनेके केन्द्रपद्धतयः केरळे नामपरिवर्तनं कृत्वा एव पुरस्थापनं कुर्वन्ति इति च कुम्मनम् अवदत्। SFIO परं ED च अन्वेषणं प्रारब्धः इत्यतः मुख्यमन्त्री अधिकं प्रतिरोधे निपतितः। गतदिने वार्तासम्मेलने विषयसम्बन्धि प्रश्नेभ्यः उत्तरं विना निवृत्तः मुख्यमन्त्री ED अभियोगे पुत्र्याः बन्धनं पिणराई विजयम् अधिकं दुर्बलयिष्यति। सुस्पष्ट प्रमाणैः SFIO द्वारा समर्पित दोषपत्रं पश्चात् पुत्रं विरुध्य अभियोग पञ्जीकरणाय सिद्धतां याति प्रवर्तननिदेशालयं च। वीणायाः प्रतिसन्धिं स्पष्टयति गतदिने प्रकटितं वर्तमानः मुख्यमन्त्रिणः दुर्बलभावः। गुरुतरप्रश्नेभ्यः उत्तरप्रदानं विना स्वीयपुत्रेति हेतुना पीडयतीति उक्त्वा निवृत्तः मुख्यमन्त्री। प्रवर्तननिदेशालयम् अभियोगं पञ्जीकरोति चेत् वीणायाः कारागारवासाय साध्यता मुख्यमन्त्रिम् आशङ्कायां निपातयति। वार्तासम्मेलने मुख्यमन्त्रिणः शरीरभाषा विभिन्ना आसीत्। 14% प्रमाणानि 270 साक्षिणः च अन्तर्भवन्ति SFIO दोषपत्रे। प्रतिवेदनमिदं विरुध्य CMRL शालया समर्पित परिदेवनं देहली उच्चन्यायालय न्यायाधीशस्य परिगणनार्थं प्रेषितं। किन्तु दोषपत्रार्पणं प्रवृत्ते साहचर्ये उच्चन्यायालय निर्णयात् परं प्रवर्तननिदेशालयस्य अन्वेषणं सजीवं भवति। SFIO प्रति विशदांशाः अपृच्छत् प्रवर्तननिदेशालयमिति वृत्तान्ताः सूचयन्ति। प्रमाणानां प्रापणे सति
प्रति अभियोगपञ्जीकरणं भविष्यति। समयेऽस्मिन्नेव भारतीय जनतादल नेता ഷോൺ ജോർജ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ സംസ്ഥാयै പരിദേവനം अदात्। CBI अन्वेषणात् मासिक उत्कोच प्रदान अभियोगं नूतनतलं प्रविशति। राजनैतिकदलानां कर्मचारी संघटनानां च नेतॄणाम् उत्कोच व्यवहाराः रक्षकोद्योगस्थानां नियमोल्लङ्घनानि च व्यतिक्रमनिरोधननियमस्य परिगणनायाम् अन्तर्भवन्ति। राज्यान्तर स्वभावं वर्तमाने अभियोगे CBI अन्वेषणं व्यापृतं भवितुमर्हति। केन्द्र अन्वेषण संस्थानाम् ऊर्जितप्रयत्नं भवति चेत् प्रतिरोधाय मुख्यमन्त्री CPM च क्लेशयिष्यताम्। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।